Hello friends, this is Dr. Sunil Kadam, welcoming you to my channel, Let's Learn Accountancy with Dr. Sunil Kadam. On this channel, I will be uploading videos on various topics of accountancy. I hope you will enjoy these videos. Hello friends, and let us talk about the journal entries required for recording the investment accounting, for doing investment accounting. आज हम पर्सनल इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड करने के लिए, पर्सनल इन्वेस्टमेंट का अकाउंटिंग करने के लिए क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी उसके बारे में सोचने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए जर्नल एंट्री बनती है और जर्नल एंट्री पास करने के लिए डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करती है। ओके, अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि इससे जर्नल एंट्री पास होती है, क्या जर्नल एंट्री पास होती है वो देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन हो सकती है जब बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट परचेस किया जाए। तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट्स रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट एंड फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट यू हैव टू पे समथिंग। आपको कुछ देना पड़ेगा, वो मनी कैश होगा, कैश आइदर हार्ड कैश दिया जाएगा या चेक इशू किया जाएगा। जनरली नाउ दीज डेज चेक से होता है। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। नाउ व्हाई इट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट? इन्वेस्टमेंट इज a real account and a bank, the bank is also a real account because it is a property. So Real's rule says that debit what comes in, credit what goes out. So in this case, investment, when you purchased it, it comes into your business, into your organization, and for acquiring that, you have paid the money. That is bank. That's why it is investment came in and money goes out. That's why investment account debit to bank account. So whatever investment you have taken, it would be having the intention behind having that purchasing that investment is to earn the returns on it. Returns it can be in a form of interest, it can be form of dividend, or it can be in the form of rentals. So if it is received, entry will pass. जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि हमें उसके ऊपर ब्याज मिले, उसके ऊपर रिटर्न्स मिले। रिटर्न्स ब्याज के तौर पे मिल सकता है, रिटर्न्स डिविडेंड के तौर पे मिल सकता है, डिविडेंड रेंट के तौर पे मिल सकता है। अगर ऐसे कुछ रिटर्न्स मिल जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड करना जरूरी है। तो रिकॉर्ड होगा by passing journal entry, bank account debit to interest account. Now, why bank account debit? Because it is came in, received, right? It is received. And why it is received? It's because of interest or dividend. Interest or a dividend is in the nature of nominal, and bank is real. So Real's rule says that debit what comes in, credit what goes out. The cash comes in, a bank comes in, and the interest is a nominal account or dividend is nominal account. Nominal rule says that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो यहाँ पे ये गेन है, रेंट है, रिसीव्ड है, इनकम है, तो इसीलिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल पास बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी जो पूरे साल में जितना भी इंटरेस्ट मिला है वो सभी ईयर एंड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फॉर दैट पर्पस एंट्री विल पास। एंट्री उसके लिए होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नो इट इज क्रेडिट, इट शुड बी क्रेडिटेड। तो
the interest account debit to profit and loss account. Why it is? Because the interest account, we want to close it and transfer to profit and loss account. So with that intention, we'll debit this account and profit and loss account is credited, because it's a nominal account. Nominal rule says that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. तो एट द एंड ये एंट्री पास की जाएगी, क्योंकि हमें डिविडेंड अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस ट्रांसफर करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के साथ बनाया जाता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रूल, नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. So dividend received is income, and that's why it is charged to profit and loss account credit side. So this is what a routine, ये हर साल होता जाएगा. हर बार जैसे परचेस किया ये एंट्री पास होगी, जैसे उसके ऊपर रिटर्न्स मिले ये एंट्री पास होगी, और वो जो एंड में जितने भी इंटरेस्ट मिले हैं वो और डिविडेंड मिला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा. There is a possibility company may sell out the investment which is brought, the investment which is purchased or acquired. If it is so, company need to record it into the books of accounts. साल में हो सकता है कभी कभार कंपनी अपने जो इन्वेस्टमेंट है वो बेच सके. अगर ऐसा होता है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अभी वो रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री क्या हो सकती है? इट इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट वी पास फॉर एक्वायरिंग इट. जो हमने परचेस के लिए एंट्री पास किया था उसका अपोजिट होगा. देखो चेक करो, परचेसेस में हमने एंट्री क्या पास किया था? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अभी उसका अपोजिट होगा तो देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अगर इन्वेस्टमेंट बेचा तो. So it is just opposite to the purchases of investment, wherein we pass entry investment account debit to bank. Now it would be reversed, bank account debit to investment. So let us understand why that profit and loss account debit is given and profit and loss account is credit is given. If that investment is sold out above the carrying amount, or lesser the carrying amount or lower the carrying amount. It means when you realize excess amount than what carrying amount, it is called as profit. And if it is a lesser or any deficit in the sale, it means your sale price is less than the carrying amount. In that case, it could be a loss. If it is so, we have to record it, because everything, whatever incurred in the organization has to be recorded, and therefore it has to be. Let us understand. जब भी कोई बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट बेचता है वो उसका कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू है उससे ज्यादा प्राइस में बेचता है तो वो प्रॉफिट होता है, और उससे कम प्राइस से बेचता है तो वो लॉस होता है. अगर ऐसी चीज आती है तो हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और वो रिकॉर्ड करने के लिए ये एंट्री क्या होगी देखते हैं. So when there is a profit, entry will pass. Let us start with the investment sold on book value, or sold on a cost price, or sold on a carrying amount. It means investment of 1 lakh sold for 1 lakh. Entry will pass, bank account debit to investment account 1 lakh, 1 lakh. That is on a cost, neither profit nor loss. It was a carrying amount 1 lakh, sold for 1 lakh. Bank account debit 1 lakh to investment account 1 lakh. अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है और वो कंपनी 1 लाख के लिए बेचती है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट अमाउंट हम बोलते हैं अगर 1 लाख का है तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख. But in this case, if we want to consider profit, let's assume the investment cost or carrying amount is 1 lakh, but sold for 1,20,000. In this case, 20,000 excess amount is received is the
profit and it will transfer to profit and loss account. Therefore, the entry will pass bank account debit 1,20,000 to investment account 1 lakh to profit and loss account 20,000. So we have incorporated profit and loss account credited excess profit and loss account here because profit and loss account prepare with the rule of nominal. Nominal's rule says that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So there is a gain on this investment and henceforth that is credited. अगर हम ये अज्यूम करके चले कि वही इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख का था वो 1,20,000 में बेचा, उसकी बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट 1 लाख था मगर वो बेचा 1,20,000 में, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एंट्री पास की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया है 20,000 से क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट रियलाइज हुआ वो भी कॉस्ट के ऊपर. और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. Nominal's rule says that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So ये gain था इसीलिए उसको credit कर दिया. Now let us understand the opposite example where the investment sold with a loss. It means the investment of rupees 1 lakh sold for 80,000. You are not able to realize 1 lakh. There is a shortfall of 20,000. It would be considered as a loss and it has to be recorded. And for that entry will pass bank account debit 80,000, profit and loss account debit 20,000 to investment account 1 lakh. So in this case, there is a loss shortfall. It is debited to the profit and loss account because the rule says debit all expenses and losses. If there any loss, it will be debited. And we have debited to the profit and loss account. तो हमने सीखा अगर इन्वेस्टमेंट बेचते समय लॉस हो गया मतलब जितना बुक वैल्यू है या कैरिंग अमाउंट है उतना कंपनी रियलाइज नहीं कर पाई, उससे कम रियलाइज कर पाई. तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 80,000 में बेचा गया तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, profit and loss account debit 20,000 to investment account 1 lakh. आशा करता हूं कि आपको समझ में आया. So this is what a basic journal entries one has to understand for recording the or for keeping the record of its investments. But what we should do, we should understand the ledger posting. It's not over, no? If you are doing the accounting in a manual basis, on a manual, not on a gadget, not on a PC or a computer or laptop, then you have to prepare a ledger. But now these days in a practical life, people are using gadgets for accounting. So they have to pass just journal entry and posting, casting, totaling, balancing, everything will be carried out by the computers, by the gadgets. You don't have to prepare a balance sheet. It will be prepared automatically because it is programming carried out for it. So ultimate task for being an accountant, you have to pass a journal entries. The person who is in a position to pass a journal entry will not face any difficulty in a practical life. But we are very much comfortable for doing the posting, casting, totaling, tallying, preparing for final account. But in a practical life, that will not be asked. But as far as the exam is concerned, if it is your offline exam, then it will be asked, you will be asked to pass a journal entry or you may ask to prepare a ledger, investment ledger. So let us understand how that investment ledger is prepared. हो सकता है आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जर्नल एंट्रीज पास करके काम खत्म हो जाए, मगर एग्जाम की तरफ से सोचा जाए तो आपको लेजर भी बनाना पड़ेगा.
तो लेजर कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं. सो लेजर इज इट in front of you. Investment, we have learned there are two type of investments. The investment which are giving you fixed return, fixed interest bearing security. For that investment, the ledger is this type. There are another category called as a variable interest bearing, variable return bearing security. So for that, the ledger will be slightly different. So let us understand first what investment on which interest is received regularly. It is to be fixed. And the example for this is the debentures, bonds, and you can say deposits also having fixed returns on it. So if you have purchased any debentures and bonds, how it will be recorded? And the ledger is in a ledger form. Don't worry, by looking at this format, you may consider, what is this? Ledger is not, but it is a ledger. Let me show you that. Investment account for the year ended, due dates of interest. Interest normally given 2 times or 3 times. Earlier it used to be 2 times in a year. Now the RBI has changed the rules and now the interests are given thrice in a year. So the ledger is date, particulars, amount. But for amount, there are 3 columns: date, particulars, amount. Amount, we have 3 columns. Why it is 3? I'm telling you. The cost is the genuine amount column of this particular ledger. But along with the cost, we have given 2 columns. One nominal value and another is interest. So nominal value is the face value of that investment. Every time you don't have to refer that document or the purchase agreement for finding out the nominal value of that particular investment, because you require refer that nominal value regularly, because your interest is based on your face value or your nominal value. Your returns will be based on that. So calculating that returns, you need to refer regularly the nominal value or face value. Therefore, the nominal value is important. That's why we added one more column here. Along with that, we need to work out interest for accrued interest or actual interest received. We have to record it as and when it is received, whenever it is due, when it is overdue or accrued. So if we keep the interest account separate and this investment account separate, then there will be a chaos. That organization may have several investments, and for each and every investment to have a proper control, is that interest is received, has it received, or if it is not received, how much is not received, to find out all those things, difficulties, we want to have an interest column along with the investment. That's why nothing to worry about it. It's just an additional information: nominal value and interest received. And this is what a regular, your particular column, cost column. So the same thing with the credit balance. तो यहाँ फॉर्मेट को देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते समय इन्वेस्टमेंट अकाउंट का नाम दिया जाएगा और कौन से साल के लिए वो लिखा जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कौन से इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना इंटरेस्ट कौन कौन से टाइम पे मिलने वाला है, उसका डिटेल वहां पे लिखा जाएगा. और इन्वेस्टमेंट का लेजर नॉर्मल लेजर की तरह ही है. डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम में 3 अमाउंट कॉलम दिए गए. अब ये 3 अमाउंट कॉलम क्यों है, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं. कॉस्ट ये उसका जेन्युइन अमाउंट कॉलम है, मगर इस कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसके कॉस्ट के साथ साथ उसका एक और प्राइस हमें बार बार जरूरत होती है, वो उसका फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू. वो उसके ऊपर मिलने वाले रिटर्न्स उसके नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट किए जाते हैं, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किए जाते हैं. इसीलिए हमें बार बार उस इन्वेस्टमेंट की नॉमिनल वैल्यू कंसिडर करने की जरूरत होती है. इसीलिए वो बार बार उसको हर बार वो डॉक्यूमेंट ढूंढना पड़ेगा. इसीलिए सहूलियत के लिए हमने उसी ही
इन अकाउंट में ही उसको दर्शाया है, इसीलिए नॉमिनल वैल्यू कॉलम की जरूरत है। और इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला कि नहीं, कितना मिला, मिलना बाकी है, मिलना चाहिए, नहीं तो हमको मांगना पड़ेगा, ये सब देखना पड़ेगा ना बार बार। तो वो अगर कॉमन इंटरेस्ट कॉलम में हो, अकाउंट्स में होगा, तो बहुत तकलीफ आने वाली, हम प्रॉपरली उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर ट्रैक रखने के लिए इसका इंटरेस्ट हम इधर ही दिखा रहे हैं, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट भी इसी लेजर के साथ साथ बनाने के लिए ये इंटरेस्ट कॉलम ऐड कर लिया। तो ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है, इट्स इजी है, कैलकुलेट करने के लिए सहूलियत मिलेगी, आसानी होगी, इसीलिए ये बनाया गया। तो देखते हैं लेजर पोस्टिंग कैसा होता है फॉर परचेस ऑफ। बट जब भी कोई लेजर क्रिएट होगा, वेन एवर वी ओपन एनी लेजर अकाउंट, इफ इट हैज एनी balancing figure, carry forwarding balancing figure, then it has to be recorded. If it is debit balance, then it has to be recorded to the debit side. If it is credit balance, it has to be recorded to the credit side. So investment is an asset and always has a debit balance. Therefore, the opening balance would be recorded to the debit side, to balance brought down. So whatever balance it was, it will be having a nominal value of that investment and the cost of that investment. Why these two differences? Because when a company purchased any investment, it's a face value, could be say 100 rupees, and it's a actual price maybe 200 rupees, because company has purchased by giving premium. Then here you will write 100 rupees as a nominal value and the cost is 200, considering all the other expenses incurred on that. So that amount could be different, and sometimes it may be the same. Nominal value and cost value could be the same. It depends upon on what price it is purchased. So whatever their nominal value, it will be carry forward and the cost will be carry forward. On that cost, from the date of last interest received till to the date of the carry forward or the opening date, whatever interest accrued has to be shown it here. So that will be recorded. तो मैं आपको बता दूं, कोई भी लेजर अगर बनाते हैं तो उसको अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट होता है तो डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में चला जाएगा। और हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एसेट है। और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड को लिखा जाता है। ओपनिंग जो भी डेट हो, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखा तो बैलेंस लिखते समय नॉमिनल वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट का जो भी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और उसका कॉस्ट जो है वो कॉस्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। हो सकता है नॉमिनल वैल्यू सपोज अगर 100 है तो कॉस्ट 200 हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रीमियम प्लस एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। कभी कभार दोनों एक 100 ही हो सकता है, डिपेंड्स। वो डिपेंड होता है कितने में आपने परचेस किया, उस हिसाब से जितना भी बैलेंस है उतना कैरी फॉरवर्ड करो। अभी ये जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर जो आखिरी डेट था इंटरेस्ट रिसीव होने का, उस डेट से लेके आपका जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ डेट है, मतलब ओपनिंग डेट है, उस दौरान का एक्यूर्ड इंटरेस्ट जो भी होगा वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा। अभी वो कैसे कैलकुलेट करना है हम सीखने वाले हैं। So we have recorded opening balance. Now let's record if any new purchases taken place. If there any new purchases taken place, we will pass entry, which we just now understood that the entry would be in investment account debit to bank. If you want to see that, let me show you. It's here, investment account debit to bank. So to record this journal entry, the ledger posting is here. Investment account debit to bank. So investment account debit to bank. P stands for purchases. So whenever investment is purchased, we record here to bank. Then we have to record the nominal value of that investment and the cost
the cost of purchases, which we have learned, cost of investment would be recorded, which include the purchase price plus incidental expenses incurred on that investment. So adding up all those expenses, we will be charging it here as a cost. And we need to record interest, accrued interest from the date of last date of investment till to the date of purchases, till to the date of acquisition. Whatever interest is due, it will be shown as a accrued interest and shown it here. अगर कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट परचेस करती है तो उसको एंट्री पास किया जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैंक परचेसेस। उसका जितना भी नॉमिनल वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू के कॉलम में लिखा जाएगा, मतलब फेस वैल्यू, और उसको जितना कॉस्ट दे दिया परचेस करने के लिए, हो सकता है वो ज्यादा हो या कम हो, वो जितना है वो लिखो। उसमें कोई खर्चा आया तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे। फिर हमें इंटरेस्ट कॉलम में एक्यूर्ड इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। जो लास्ट इंटरेस्ट मिलने वाली डेट है उस डेट से लेके जिस दिन परचेस किया उस दिन तक जितना भी इंटरेस्ट एक्यूर्ड है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, और वो यहाँ पे दिखाएंगे। फिर हमने thereafter we have learned the journal entry for interest received or a dividend received. If any interest is received or a dividend is received, entries pass bank account debit to investment account. Let me show that. Let me show that. Let me show that. It's here. Bank account debit to interest or dividend. This has to be recorded. So we have prepared interest account debit side, interest account credit side. So interest account credit side by bank. Interest received, IR, interest received. Only in interest column, the amount is received. Whatever interest received is recorded. So at the end of the year, we will close this account and carry forward the balances to the profit and loss account. So whatever total interest is received will be calculated and written to the debit side. The balancing figure is the actual interest received and will transfer to profit and loss account by passing the entry. Entry will pass that interest account debit to profit and loss account. So interest account debit to profit and loss account. अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो एंट्री पास करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट अकाउंट ओपन करके रखा है, इंटरेस्ट अकाउंट का डेबिट साइड, इंटरेस्ट अकाउंट का क्रेडिट साइड। एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे एंट्री की जाएगी। और आखिरी साल के आखिर में हमें ये इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, और उसके लिए एंट्री पास की जाएगी दैट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड, द बैलेंस इज ट्रांसफर्ड। Then there is a possibility of what? The investment may sold up. If it is so, the interest, the entry has to be passed, and that we have learned. Entry would be if it is sold on cost price or carrying amount, the entry will pass bank account debit to investment account. So bank account debit to investment account credit side by bank. S stands for same. So bank credited the nominal value of investment sold and the cost of investment sold, the proceeds from the investment sold, sell, that will be recorded. If it is a higher than the cost, then it would be a profit and it will be credited to the profit and loss account. See, a profit and loss account, the profit will be credited to the profit and loss account and debited to investment account. So debited to investment account to profit and loss account, profit would be charged here. So if there any loss, it will be
debited to the profit and loss account and credited to the investment account. Therefore, by profit and loss account loss, it's here. In a one investment, you will have either profit or loss. Both will not occur on the same time. अगर हो सकता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बेचा गया, तो उसका रिकॉर्ड करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय बैंक सेल लिखा जाएगा। जितना नॉमिनल वैल्यू है उतना यहाँ पे लिखेंगे, उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिलने एक्रूड इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा, और जितना सेल्स प्राइस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट यहाँ पे होगा। अगर कम है तो लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस विल बी क्रेडिटेड। अगर आप ध्यान से देखो तो उसका कॉस्ट, प्रॉफिट का कॉस्ट, वो प्रॉफिट का अमाउंट है तो कॉस्ट कॉलम में लिखा है, इंटरेस्ट और नॉमिनल अकाउंट में नहीं। और यहाँ पे भी लॉस का अमाउंट कॉस्ट कॉलम में ही है, आगे नहीं है। सो ये कॉलम में ही लिखा जाएगा। At the end, we have to close this account and carry forward the balances. And for closing, we will close first nominal account, nominal value column, and we'll get to the credit side and the balancing figure. Similarly, we will close the cost column, get a total, write to the credit side, get a balancing figure as a buy balance carried down. Then, whatever closing nominal value on that, find out accrued interest. Date of last interest till to the date of closing, whatever month are there on that, those months outstanding interest, that is accrued interest, is has to be recorded here. And then we'll close the interest account, carry forward to this side, and the balancing figure will transfer to the profit and loss account. This is what a normal way of presenting your इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज जब करना हो तो हमें पहले नॉमिनल अकाउंट को, नॉमिनल कॉलम को क्लोज करेंगे और वो यहाँ लाएंगे क्रेडिट साइड में। इसमें से जितना भी क्रेडिट बैलेंस है वो कैरी माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। सिमिलर तरीके से कॉस्ट को भी क्लोज किया जाएगा, उसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा वो क्रेडिट साइड में लेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकाला जाएगा, बैलेंसिंग क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंटरेस्ट कॉलम में दिखाया जाएगा, और बाद में हम इंटरेस्ट कॉलम को क्लोज करेंगे और वो बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तरीका होता है अपना लेजर बनाने का, इन्वेस्टमेंट का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, डाउट, डिफिकल्टी or feedback, feel free to write in a comment section. Make sure to hit the like button if you understood the concept explained in this video. If you would like to see more such kind of videos, don't forget to subscribe this channel. Make sure to hit the bell icon as well in order to get notification whenever I upload a new video. Share this video with your friends in order to make them benefit out of this as well. Thank you once again.